हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्सीबिट्सी बाय जिताशी। ये नए साल का हमारा पहला वीडियो है, तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। एंड आशा करती हूँ ये नया साल हम सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आए और सबके लिए बहुत अच्छा जाए। तो लास्ट के 2 साल काफ़ी चैलेंजिंग थे हमारे लिए, हम सब के लिए, because we have seen something which we have never ever experienced in life। तो आशा करती हूँ कि आने वाले साल में हमारा लाइफ थोड़ी इजी होगी और हमारे लाइफ में चैलेंजेस कम होंगे और खुशियाँ ज़्यादा हों। विद दैट नोट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारा इस साल का पहला वीडियो है और हमने बाय द वे इस दिसंबर हमने हमारे चैनल ने भी 1 साल कंप्लीट कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई विश इस अपकमिंग ईयर में मुझे आप लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मैंने अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया है कि आई एम गोना हैव अ मच बेटर स्टूडियो सेटअप। राइट नाउ आई हैव अ वेरी टेम्परेरी सेटअप विच आई हैव डन to make videos, but for this year I'm planning to have a much better studio space। और दूसरा प्रायोरिटी मेरी लाइफ में रहेगा पीस ऑफ माइंड। उसके लिए एनी विच वेज आई स्टिल हैव पीस ऑफ माइंड इन माई लाइफ, बट आई एम गोना हैव मोर फोकस ऑन द योगा एंड मेडिटेशन। एंड मैंने actually on the very same theme I kept my upcoming videos also। I'm gonna make a series on Lord Buddha। लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग बनाने वाली हूँ मैं, लॉर्ड बुद्धा का आर्ट वर्क्स बनाने वाली हूँ मेरे आने वाली पेंटिंग्स आने वाले वीडियोस में। तो आज का भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आज की वीडियो में मैंने आई एम गोना मेक दिस ब्यूटिफुल आर्ट पीस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। दिस इज़ अ टेक्सचर्ड आर्ट पीस जिसमें मैंने क्ले का यूज़ किया है और मैंने क्ले ड्राइड क्ले से थोड़ा टेक्सचर्ड यहाँ पे दिया है एंड देन आई हैव यूज्ड द एक्रेलिक पेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। आई होप यू लाइक इट। So I have this cardboard which I'm gonna cut in a circular shape। I have 2 of this। In this I have taken POP and Fevicole, so I'm gonna mix it to make a smooth paste। First I'm gonna give a clear coating over here of POP to make it a little sturdy। Once this is done, just keep it to dry for some half an hour। Leftover paste you can use to give it a good texture, which I'm gonna do now। So I'm gonna give a rough texture to this board। Let's keep it to dry for some time। While it's drying, I'm just giving some textures at the edges also। Now just leave it to dry properly for about like half an hour, 45 minutes it's gonna take। So start further process after it gets dry। Now it is dried, so now I'm gonna make painting over this। I'm gonna make Lord Buddha in this frame।
ah, ah.